pleasure for me to welcome the young business leaders in this ancient city of Srinagar. Young President's Organization, Greater India Chapter is an extraordinary forum for young industry leaders to engage, interact, and share the ideas that will shape the future. I know every such outstanding groups lives by a code of conduct, value, trust, and ethics. And when I look back into the history of Young Presidents Organization and the records of extraordinary chief executives, I can say there is no parallel in business history where a platform passionately follows its business heart as well as concerns for various issues that influence our society. The ability of young CEOs to adapt successfully to the ever-changing economic environment, their contribution in the country's growth story, startups, unicorns, and the resolve to give back to society is truly exemplary. I express my gratitude for what you have done individually and as a group that cares for the country. Friends, Jammu Kashmir is truly a crown of thousands of year-old rich civilization of Bharat, which taught the values of inclusive culture and the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam to the world. Since aged Jammu Kashmir is known as the paradise on earth, and let me tell you, it is not just a piece of land on the map, but also home to almost all the religions known to the humankind. Jammu Kashmir is also a significant example of immortal organic composite Indian culture, which has been providing elevated intellectual and spiritual experiences to explorers, seekers, travelers, historians, and traders. I know all of you are aware of its history post-independence and how a temporary provision was converted into a tool to case the millions of aspirations and dreams. So I don't want to burden you with those details. The most unfortunate part, however, is that people were discriminated and deprived of a normal life for almost 7 decades. And if you examine closely, the temporary provision gave nothing but sectionism, terrorism, nepotism, and widespread corruption on a large scale. For almost 72 years, the benefit of laws enacted by the Indian Parliament could not be implemented in Jammu and Kashmir. The situation was exploited by our neighboring country, which happens to be the biggest exporter of terrorism in the world. But everything changed in August 2019. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji restored the lost glory of Jammu Kashmir, and here we are today discussing business, hosting international seminars, literary festivals, witnessing growth of new startups. Every other day, new industrial unit is setting up its shop. Youth are equipping themselves with cutting-edge technology. Women are charting new pathways in entrepreneurship. Farmers are harvesting the new wealth, and every section of the society is being empowered so they can contribute to make Jammu Kashmir the greatest success story of India. And interestingly, major business houses of the country and major economies of the world want to be part of this story. The first FDI in Jammu Kashmir by Imad Group is taking shape. There has been a significant shift in the security situation. Sectionist and terrorist ecosystem has been decimated. After so many decades, youth have the opportunity to live a life that is meaningful and fulfilling. Cinema halls and cafes have started even in small towns. Cities are competing with each other to be smarter and sustainable. Even our villages are turning to innovative solutions for waste management and to strengthen the economic condition of the communities for sustainable future. Jammu Kashmir is the only union territory or state in the country which has been declared ODF plus model
for sustaining ODF status, waste management, cleanliness, and plastic waste management. You can just walk around the Polo View in the heart of the Srinagar and you will find it is more serene than Khan Market or MG Road. You can go to Jhelum riverfront and you will discover it is better than Joggers Park of Warsaw. If you are lucky, you may encounter a flash mob performing on enchanting folk tunes. I know you must be pushing your imagination and savoring each word I am saying, but I am sure during your stay, you shall get those moments to live and cherish. And due to these interventions, we are back on the international tourism map after 3 decades. Last year, we hosted about 1.88 crore tourists, and this year till September, the figure is staggering 1.67 crore. After the amazing success of G20 meeting in Srinagar, the number of foreign tourists has gone up to by 350%. Those foreign delegates who had joined us for G20 meeting want to return again, and I would like to say they are the new brand ambassador of Jammu Kashmir, promoting not just scenic beauty, but also exquisite art and crafts across the globe. Friends, Jammu Kashmir is also a byword for socio-economic miracle today. In the last 3 years, we have tried to transform decades of damage and destruction into prosperity, thanks to the relentless drive, determination and guidance of Honorable Mr. Modi. We have worked hard and created the right environment for people to live the life on their own terms, provided right conditions for businesses, startups and industries to flourish, and created right opportunities for young industry leaders like you to convert the ideas into profitable businesses. Coming from an IIT, I have read many definitions of great leaders and what should be the qualities of a good leadership. But what I found in Bhagavad Gita appears to be more plausible. In the chapter 16, Lord Krishna describes these qualities as fearlessness, pure heart, upright, truthful, wisdom, compassion, gentleness, modest, determined, and free from malice. Friends, you are not just wealth creators, but possessor of these qualities, and I urge you to be a part of our journey to create a brighter future of Jammu Kashmir. There is a beautiful statement of Henry Van Dyke, and I quote, "The best rose bush, after all, is not that which has the fewest thorns, but that which bears the finest roses." I personally attach special value to relationship with the industries because we are offering tremendous opportunities in various sectors, which I will discuss later, but above all, the best incentives in the country. We have discovered the world's largest lithium reserve, which will not only give the boost to electric vehicle industry in the country, but also make Jammu Kashmir a hub of EVs, electronic gadgets, and medical devices. So I can say there is a bouquet of roses for business leaders, chief executives like you to invest in Jammu Kashmir or highlight its potential to the domestic and world business leaders through your platform. I can assure you, Jammu Kashmir administration is committed to provide congenial environment for business. If you take decision today, I am sure our future generation will appreciate this substantive partnership with an economy that is among the fastest growing in the country. एक बड़ा पुराना शेर है, इश्क में क्या नुकसान नफ़ा है, इश्क में क्या नुकसान नफ़ा है, हमको क्या समझते हो, हमने सारी उम्र ही यारो दिल का कारोबार किया। तो जम्मू कश्मीर का जो कल्चरल तथा स्पिरिचुअल डेप्थ है, वही डेप्थ बिजनेस और इंडस्ट्री में भी हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री
एवं यूटी को म्यूचुअल लाभ मिले, बेनिफिट हो। यूरोपियन क्लाइमेट की वजह से जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज दोनों सेक्टर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सेक्टर में एमएसएमईज के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं। सैफरन, एप्पल, वॉलनट, चेरी, एलमंड, इन 5 प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम मात्र 2 से 3% फ्रूट्स की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन आज की तारीख में कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कारोबार के लिए असीम संभावनाएं यहाँ हैं। सैफरन, मुस्कबुज्जी, राइस, भद्रवा, राजमा, सुलाई, हनी, कलाड़ी जैसे अनेक ऐसे इंक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैगिंग द्वारा ग्लोबल मार्केट में नई पहचान मिली है और उनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मौजूद सभी इंडस्ट्री लीडर्स और आपके माध्यम से मैं देश के अन्य संबंधित एमएसएमईज को आने वाले भविष्य के इस सनराइज सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ और मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी से लेकर के इस सेक्टर के लिए जरूरी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंसेंटिव जो देश में कहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा यहाँ प्रदान किया जाएगा। आने वाले 1-2 वर्षों में यह सेक्टर और अधिक ग्रो करे, इसके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए बना है। बजट के अलावा हर साल काफ़ी पैसा हम लोग उसमें लगा रहे हैं और ये जो 29 प्रोजेक्ट हमने बनाई हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 4 साल बाद यहाँ का एग्रीकल्चरल ग्रोथ 12% के ऊपर होगा और जो आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो एप्पल हो, सैफरन हो या ढेर सारी चीज़ों का नाम, उसमें भी उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। जम्मू कश्मीर में रेल और रोड अगले मार्च तक कश्मीर कन्याकुमारी से रेल से कनेक्टेड हो जाएगा। फरवरी में ही हो जाएगा, मार्च में इसलिए कह रहा हूँ कि आप आ सकेंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मैं जब आया था 2020 में, मुझे याद है जम्मू से श्रीनगर आने में 10 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में लोग आ रहे हैं और जो अंतिम टनल का काम 6 महीने में हो जाएगा तो 4 घंटे से ज़्यादा आपको अब जम्मू से श्रीनगर आने में नहीं लगेगा। तो रेल से भी कश्मीर कन्याकुमारी से कनेक्टेड हो जाएगा और रोड से भी कश्मीर कन्याकुमारी से कनेक्टेड हो जाएगा। 4 घंटे में आप जम्मू पहुंच जाएंगे और कटरा से एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के लिए जा रहा है उससे आप 5-5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कन्याकुमारी की एक्सप्रेसवे होते हुए तो मैं समझता हूँ सड़क मार्ग के भी आप पहुँच जाएंगे। मुझे स्मरण है जब मैं आया था तो कुल 24 फ्लाइट यहाँ ऑपरेट होती थी श्रीनगर में, आज 126 हो रही है। जम्मू में 4 होती थी, अभी 44 हो रही है। तो इंटरनेशनल कार्गो, इंटरनेशनल फ्लाइट सब शुरू हो गई है। नए टर्मिनल भी बन रहे हैं जो जल्दी पूरे हो जाएंगे। यंग लीडर साइमन साइनेक का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, जो अनेक स्टार्टअप्स और फॉर्चून 100 कंपनीज को बिजनेस आइडियाज़ देते रहे। मैंने बहुत पहले 11-12 में एक उनका आर्टिकल पढ़ा था और जो उन्होंने कहा था वो मैं कोट करूँगा। आई वॉन्ट टू कोट ए फ्यू लाइन्स। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी डू इन आवर लाइव्स, आवर वाई, आवर ड्राइविंग पर्पज, cause or brief never changes. So start with why, but you must know how. जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक परिवर्तन के पश्चात इसके पुनर्निर्माण के कई पहलू थे, जिसमें एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी था। काफ़ी समय लगा जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनानी थी। अनेक स्टेक होल्डर से भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसमें व्यक्तिगत रूप से काफ़ी रुचि ली और जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम 2021 आई है उपलब्ध है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव है उससे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल स्कीम में है।
हमारे पास लगभग 200 प्रपोजल रोज आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। ज़मीन हमारी समाप्त हो गई है, देने के लिए ज़मीन हमारे पास आज की तारीख में नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश नहीं कर रहे हैं, सही में कोशिश कर रहे हैं, और वो ज़मीन की कमी नहीं होने देंगे। दूसरा, मैंडेटरी हमने कर दिया है चेंज ऑफ लैंड यूज़, 30 दिन में जो अप्लाई करेगा उसको मिलना ही है। ऑनलाइन सर्विसेज में आज देश में हम नंबर 1 हो गए। जब हम आए थे तो 19 सर्विसेज थी, मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ करके 1050 सर्विसेज हमारी आज ऑनलाइन है यहाँ। और देश में पहले राज्य हम हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सर्विसेज को ऑटो एस्केलेशन मोड पर कर दिया है। ऑटो एस्केलेशन मोड का मतलब कि अगर किसी को लैंड रिकॉर्ड चाहिए और उस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में लिखा है कि 15 दिन में मिलना है, तहसीलदार को देना है, तो 15 दिन में अगर नहीं दिया तो 16वें दिन एस्केलेट करके वो एसडीएम के पास चला जाएगा, और दूसरा उसकी तनख्वाह में से 200 रुपया उसी दिन कट जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा या नहीं होगा वो अफसर तय करेंगे। अब तक 1000 लोगों पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लग गई है। तो जितनी हमारी सर्विसेज हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में, अब समय सीमा के भीतर बिना कहे किसी को भी, सामान्य आदमी को भी मिल जाती है। अब स्वाभाविक रूप से आपके मन में एक सवाल होगा कि वाई टू इन्वेस्ट इन JNK, इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना है हमने, यहाँ क्यों आए? स्वाभाविक रूप से सवाल होगा। तो एक तो मैंने पहली बात कही कि सबसे बेहतर इंसेंटिव हम दे रहे हैं। देश में सबसे सस्ती बिजली भी इंडस्ट्री को हम ही दे रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री का जो अपराध का डाटा है उसमें आप देख लीजिए तो देश में सबसे कम अपराध भी जम्मू कश्मीर ही आता है, उसके बाद कोई राज्य आता है। तो ये तीनों जो चीज़ें इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए। बाकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब जो नई टर्मिनोलॉजी चली है, तो वो केवल यूज़ नहीं होगी, वास्तव में इंडस्ट्री सेक्रेटरी, मैं संयोग से मुझे ये अंदाज नहीं था, नहीं तो मैं बुलाया होता उसको, विक्रमजीत को। वो एक पुलिस ऑफिसर है। देश में कम जगह पुलिस ऑफिसर को इंडस्ट्री सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन उसने दुनिया के सबसे अच्छे संस्थान से पढ़ाई की है, जीवन भर इंडस्ट्री में काम किया है, बैंकिंग में काम किया है, और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग का हमारा इंडस्ट्री सेक्रेटरी है। हर तरह से चीज़ों को वो हैंडल करना जानता है। एक्सपोर्ट हब के रूप में भी हम कोशिश कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अनेक हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स हमारे हैं। कारपेट, पश्मीना, सोजनी, पेपर मासी, वॉलनट वुड कार्विंग, खत्म बंद, कनी साल, चिकरी, वुड क्राफ्ट, बसोली पेंटिंग, इन सबको GI टैगिंग में मिल चुकी है। और टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो अपने इनोवेशन और इन्वेंशन सेंटर शुरू किए हैं, तो किसी IIT से बेहतर ट्रेनिंग हम बच्चों को दे रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की भी। मैं समझता हूँ कि 2 साल के भीतर एक डिजिटल सोसाइटी के रूप में जम्मू कश्मीर विकसित हुआ है। मैं जब आया था अगस्त 7, 2020 को, तो यहाँ एक प्रथा थी कि दरबार मूव होता था महाराजा साहब के ज़माने से। तो मुझे चीफ सेक्रेटरी ने कहा, साहब कि अंतिम फ्राइडे को अक्टूबर में यहाँ से जम्मू चलना है, तो आपको सेक्रेटेरिएट आना चाहिए। तो मैं गया तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रक में फाइल लद करके वो श्रीनगर रवाना हो रही थी। हमने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये अभी जा रहे हैं, फिर अप्रैल के अंतिम फ्राइडे को ये सब फाइलें ट्रक पर लद करके श्रीनगर आए। हमने कहा अब कोई ट्रक नहीं चलेगी, कोई फाइल नहीं चलेगी। उस दिन से फैसला हुआ और अब हम देश में नंबर 1 पहुँच गए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट in the last month we clocked more than 1.7 crore e-transactions, which is roughly 5.5 lakh e-transactions per day. तो मोटे तौर पर अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई है और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम आपको भरोसा दे सकते हैं। कुछ चंद लाइनें कह के मुझे जाना भी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं,
अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं. You are an eagle. Your job is to fly higher and higher. Still many sky is there before you to climb. There are worlds beyond the stars too, and many more trials in love still go through. Dear friends, I truly value your presence here and deeply admire your efforts to organize this conference, and I know for certain that all the young leaders present in this room will serve as a brand ambassador of Jammu Kashmir across the country and abroad. I am happy that industry leaders are showing great interest in our capabilities. I want them to invest, grow, flourish, and become a partner in our development journey. We are willing to look at any suggestions that you might have. I am sure you will not be disappointed in having a long-term relationship with this paradise on earth. I wish you all the success. Thank you. Jai Hind.